talk about vector algebra. देखो, when I talk about vector algebra from master's point of view, vector algebra में eigen value and eigen vector, there are very high chances that there will be a question that will be asked on this topic. But इससे पहले, before we do eigen values and eigen vectors, I just want to do a very little basic of vector. So I just want to tell you what vectors is all about, or कैसे हम vectors, who developed vectors, for example, and who gave the concept of vectors. So there was this individual, his name was W.R. Hamilton, right? And he is the one who gave the concept of vectors. उन्होंने ये vectors concept start किया. Ideally, vector concept is to be applied only for science students. ज्यादातर, मतलब ज्यादातर हम vectors को science से relate करते हैं rather than relating it to economics. But तो भी थोड़ा बहुत economics में भी vectors का use है. जैसे for example, in some books you will read कि consider a vector of consumption. ऐसा कुछ लिख देते हैं and then they give you these values x1, x2 till xn. ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये है that x1 units of good 1 are consumed, x2 units of good 2 are consumed, and xn units of good n are consumed. तो although vector may seem to be more of a science concept, but फिर भी basic vectors का concept हम इसमें भी use कर सकते हैं, अपने economics में भी, microeconomics में भी it can be used. Vector ideally is any quantity. अगर साइंस की बेसिक डेफिनेशन के साथ जाएं तो वेक्टर कोई भी ऐसी चीज है which has magnitude and direction, right? तो अगर मैं बता पाऊं कि ये 40, जैसे फॉर एग्जांपल if I tell you that there is a train and this train is going from left to right at a speed of 40 km per hour. So I have given you direction of the train also, and I have given you the speed of the train also, na? So whenever anything has a magnitude and a direction, उसको हम vector बोल देते हैं. Now, there is first thing, there are some properties of this vector. एक basic property ये है कि किसी भी vector का एक initial point होगा जहां से वो start हो रहा है, और किसी भी vector का एक terminal point होगा जहां पे वो end हो रहा है. जैसे अगेन यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेन. जब हम किसी भी ट्रेन की बात करते हैं, सपोज आई टेल यू दैट देयर इज अ ट्रेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली and it goes to say Katra, so I can go ahead and tell you na that okay, this is the starting point and this is the end point of the train. तो हम आपके start और end point की बात करते हैं, सबसे पहली बात. Secondly, whenever we talk about a vector must have some magnitude. और हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम एक क्वांटिटी की बात करें, तो ऐसी जैसे स्पीड हो गई, राइट? तो एनी मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव. मैग्नीट्यूड को हम नेगेटिव वैल्यू असाइन नहीं कर सकते. सो ये एक बहुत बेसिक एमसीक्यू है कि जब भी हम एक वेक्टर, सपोज मेरा वेक्टर है वेक्टर ए विच इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम ये दो लाइंस लगा देते हैं, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. So whenever we talk about the magnitude of a vector, so just remember that it is never negative, right? Magnitude cannot be negative क्योंकि indirectly वो vector की length बता रहा है, और किसी भी चीज की length negative नहीं हो सकती. It has to be a positive number. So magnitude of a vector is a non-negative number. ये चीज हमें याद रखनी जरूरी है that it is a non-negative number. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, दैट कंसिडर अ वेक्टर एंड इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई, जे एंड केस. ऐसा कुछ दिया हुआ है, 4i प्लस 3j माइनस 1k, या कभी कभी 1 विल नॉट बी गिवन. उसको एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर नथिंग इज गिवन माने कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, राइट? समथिंग लाइक दिस इज गिवन टू यू एंड दे आस्क यू, दिस क्वेश्चन इज देयर इन द मॉक पेपर्स आल्सो, दैट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर.
the magnitude of vector is ये coefficient plus ये coefficient plus ये coefficient whole square under root. So if I find out the magnitude of vector v, तो क्या हो जाएगा? It would be 4 square plus 3 square plus minus 1 square under root. So I will consider these coefficients. इनका हम square करेंगे. I will square these up. And then I am going to go ahead and I'm going to find an under root of this. So this is going to give me 16 plus 9 plus 1 under root. Under root of 26. So this will be your magnitude. This is one very common question asked in exam. Calculate the magnitude of the vector. Sometimes in exam they may ask you definition of some vectors. तो वो भी थोड़ा सा important है. The first definition which is important of a vector, that is called as a zero vector. अब एक zero vector, as the name suggests, a zero vector is any vector whose terminal and initial points coincide. मतलब अगर एक dot ही है, इसका start और end point same ही है, then it is called as a zero vector. Usually vector point A से शुरू होता और B तक जाता. But अगर मेरे को इसके magnitude को zero करना है, this means that point A and point B should coincide with each other. तो अगर starting and end point of the vector are the same, if they coincide with each other, that means it is a zero vector. तो zero vector को ऐसे करके भी represent किया जाता है, and it is also called as a null vector. It means that the magnitude of this vector is zero, right? Then you have a unit vector. अब एक यूनिट वेक्टर वो वेक्टर हो गया whose magnitude is 1. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम उन्होंने आपको बोल दिया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, एंड उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए. सो जैसे यहां पर कुछ होगा, जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कुछ 4 आपको वेक्टर्स दे दिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर. तो हमें बस ये देखना होगा कि कौन से ऐसे कोएफिशिएंट्स हैं सच दैट व्हेन दे आर स्क्वायर्ड एंड उनका अंडर रूट निकाला जाए, दैट शुड गिव मी 1. बिकॉज इफ दे आर यूनिट वेक्टर, तो इनके कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल के आई मस्ट गेट द आंसर एज 1. Or if I square on both sides, I must get x square plus y square plus z square as 1. This becomes a unit vector. Sometimes थोड़ा सा और easy कर देंगे. So they may go ahead and say that assume equal coefficients. फिर एक unit vector के coefficient क्या हो सकते हैं? And calculate unit vector coefficient. Now if I assume equal coefficient, अगर मैं ये assume करूं कि x, y और z बराबर के हैं, if I assume this, तो do you understand that if x is equal to y is equal to z, and if I just plug it here, तो मेरे पास आ जाएगा x square plus x square plus x square is equal to 1, 3x square is equal to 1, x will be 1 upon 3 under root plus minus. तो मतलब मेरे कितने सारे इससे यूनिट वेक्टर्स क्रिएट होते हैं. सो आई नो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z. सो इफ x इज 1 by root 3, y को भी मैंने 1 by root 3 बोला, z को भी मैंने 1 by root 3 बोला. सो इफ आई राइट दिस, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है. बिकॉज वेन यू विल डू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट, आपका आंसर 1 आएगा. You can go ahead and try this. 1 by root 3 whole square plus 1 by root 3 whole square plus 1 by root 3 whole square under root, ये हो जाएगा 1. Right? इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये तो suppose all pluses are there, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन होता, जैसे यहाँ पर प्लस होता पर यहाँ पे माइनस भी होता और यहाँ पे भी माइनस होता, then also it would have been a unit vector. क्योंकि it does not matter ना कि अंदर प्लस है या माइनस, square will always be positive. So it means that from here I have created so many unit vectors. मेरा एक unit vector ये भी है 1 by root 3 I minus 1 by root 3 j plus 1 by root 3 k, ये भी एक unit vector है.
बिकॉज a square plus b square plus c square, जब मैं इनका तीनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करूंगी, देन ऑल्सो आई विल गेट द आंसर एज 1. So this is one thing that can be asked in exam. They can ask you about unit vector. They can ask you about zero vector. They can ask you about equal vector also exam में. So for example, in equal vector, two vectors are said to be equal to each other if they have same magnitude. अगर उनका magnitude and direction same है, then they will be having, then they can be written as equal vector. तो हमें दो vectors का magnitude निकालना होगा, direction को हम नहीं निकाल सकते. That will be given to you in exam. And उसके बाद we will just go ahead and say कि okay, if the magnitude is coming equal, अगर उनकी direction same होती है, then the vectors would be equal to each other. So this is one kind of question that can be asked in exam. Then another thing that can be asked in exam is, जैसे this has been asked multiple times in exam, they can go ahead and they can ask you multiplication of a vector. Now when we talk about multiplication of vector, तो एक basic multiplication of vector which can be asked in exam is scalar multiplication. जैसे for example, they tell you that there is a vector, this is 4i plus 3j, find the magnitude of 3 times the vector. तो माने पहले तो उन्होंने बोला कि इस वेक्टर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, वी कैन जस्ट गो अहेड एंड मल्टीप्लाई इट विथ 3. एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि जो वेक्टर आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएगा, उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है. सो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई माई वेक्टर विथ 3, तो दिस विल बी 3 times 4i plus 3j. तो ये हो जाएगा 12i plus 9j. और अब अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, सो वी कैन जस्ट गो अहेड एंड से कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट विल बी 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अंडर रूट. दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. So this kind of question can be asked in exam. So let me give you some of the question. You will go ahead and just quickly answer this beta to me before we go ahead. So I am telling you that there is a vector A and A represents xi plus 2j plus zk. And I am telling you there is a vector B and B is representing 2i plus yj plus k. You need to tell me the value of x, y and z. X, y and z का आपको मुझे value देना है. I am telling you that the two vectors A and B are equal to each other. Just go ahead and tell me what will be x, y and z. What do you think will be x, y and z? Quickly. Anyone? 2, 2 and 1. Okay. 2, 2 and 1. Okay. Correct, beta. Very simple question. So we just compare coefficient with coefficient. तो जब हम coefficient को इससे compare करेंगे, this gives me 2, this gives me 2, and इसका coefficient we can take it at 1. So this will give me at 1. So when the vectors are equal to each other, we will just go ahead and compare them. ठीक है? अच्छा, question number 2. I am telling you that vector A is I plus 2j and vector B is given to you as 2i plus j. You need to tell me, are the two vectors equal to each other? Are the two vectors equal to each other? This is tricky. Go ahead and solve this and tell me. Are the two vectors equal to each other? Anyone? Okay. Magnitude is same.
अच्छा, नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, ध्यान से सोचना। हाँ बेटा, जब ऊपर वाला क्वेश्चन किया और मैंने बोला कि द टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर, किसने जाके मैग्नीट्यूड निकाला? हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? नन। क्या किया जब इक्वल करना था? यू इक्वेटेड दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। यही तो किया टू टेल दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। सो डायरेक्शन इक्वल होने के लिए, सो जस्ट लिसन, हाँ, द टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आई विल से यस। कैसे? ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस इज कोएफिशिएंट 1, दिस इज कोएफिशिएंट 1, तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 5। बेटा बी का क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, दैट मीन्स अंडर रूट 5। हाँ, मैग्नीट्यूड इज सेम। तो अगर मेरे को, इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन, यू आर गिवन 4 ऑप्शंस एंड इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यस, ये तो ट्रू है। बट जब हमें ए इक्वल टू बी करना है तो वी वांट विद मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन शुड बी द सेम, और उसको चेक करने के लिए वी रिक्वायर कॉरेस्पॉन्डिंग components to be the same. जस्ट लाइक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने इसके कंपोनेंट को इससे इक्वल किया, इसके कंपोनेंट को इससे, और इसके कंपोनेंट को इससे। कंपोनेंट टू कंपोनेंट इक्वालिटी हैज टू बी मैच्ड, सो वी कैन से दैट यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज द सेम, दोनों का रूट 5 आ रहा है, बट द टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दैट इज हाउ आई विल चेक द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, सो आई नीड टू इक्वेट दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, विच इज नॉट इक्वल इन ईच अदर। ओके बेटा।